Hello, good morning, students. So today we are going to start our first chapter of 8th standard, which is about socio-religious reform. Means in earlier time there are many representatives who started one movement to remove or abolish some of the evil custom from our society. So, in your textbook, page number 1, in the 19th century, Indian society was infested with various social evil customs like superstition, literacy, ignorance, evil custom, etc. Earlier, our society is infested or follow so many evil customs in which the first one is superstition, literacy, casteism, then discrimination, all. The condition of woman was very bad at that time. It means they have to affected by sati or johar or dudh piti. There were some of the evil customs like denial of widow remarriage, means they have no permission to remarriage if their husband or if a person's wife would be dead. So due to the Western education, there is a little bit benefit to our society, means that they were having the awareness amongst our society. So Raja Ram Mohan Roy was the first among such reformers. You have to remember that who was our first reformer. So Raja Ram Mohan Roy, Raja Ram Mohan Roy, the first reformer. The first reformer. Okay. So today we are going to learn about Raja Ram Mohan Roy. It means that he is born and which movement, which activities carried by this person. So first one, Raja Ram Mohan Roy, who was born in the year 1772 in the Hooghly district of Bengal, means in Radhanagar village, and he belongs from Bengal and Brahmin family. राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, जो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड हु मैरिड इन वेरी अर्ली चाइल्डहुड. सो हिज brother's wife became Sati on her husband's death, and this event shook Raja Ram Mohan Roy very deeply. क्या हुआ था? राजा राम मोहन रॉय जिनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, एंड एक इंसिडेंट जिसकी वजह से राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले रिफॉर्मर बने थे, बिकॉज जब उन्होंने एक इंसिडेंट देखा that उनकी ब्रदर की जो वाइफ थी वो क्या हुई थी? सती. एंड दिस इंसिडेंट shook him very deeply. So he started to protest some of the evil custom, and he protested the evil customs like child marriage, casteism, dudh piti, etc. He started the Bengali newspaper named Sambat Kaumudi, and in the year 1821 CE, and also Mirat al-Akbar, it was here in the year 1822. Raja Mohan Roy was the first person who started a newspaper, in which he started two newspapers. The first one is Sambat Kaumudi and the second one is Mirat al-Akbar. Sambat Kaumudi was published in the language, means Bengali language, and the second one Mirat al-Akbar, which is published in Persian language. First one is 1821 and second one published in 1822. Brahmo Samaj was established in the year 1828 CE. Raja Ram Mohan Roy established the Hindu College in Kolkata. Raja Ram Mohan Roy, who also published Brahmo Samaj in 1828, and who also established one Hindu college in Kolkata. He recommended many changes to the British government like independence of press, freedom of speech, movements rights, personal liberty, judiciary, independent from executive, etc. There are such a many reforms and a movement, and we can say that object which they recommend to the British government, like which one have to be reformed and which one have to be changed, like freedom of speech, that हमारी जो प्रेस है उनको थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो थोड़े अच्छे से काम कर सके, वुमेन्स को राइट मिलनी चाहिए, हमारी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, एक्सेट्रा. As we know that Raja Ram Mohan Roy, who
about sati. So he continuously tried to abolish sati pratha, but he couldn't be successful in this. So he talked with William Bentinck. So William Bentinck was the person who abolished sati pratha in 1829. Raja Ram Mohan Roy talked with that person, and the person William Bentinck, who was the person who abolished the sati pratha in 1829. The Emperor of Delhi sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 CE in regards to his case of right to property. So one day it happened that Raja Ram Mohan Roy had to go England to work with the Bengal's Nawab, and who sent him to go to England with the related of property and cases. And between these, in the city of Bristol is a city of England, and there Raja Ram Mohan Roy died. And then after their association, which is Brahmo Samaj, carried by their other leader, and now this leader work out to abolish such evil customs like. So in the last, now we point out some of the important points of Raja Ram Mohan Roy by which you can easily remember about this topic. First one, Raja Ram Mohan Roy. So पहला पॉइंट है बॉर्न। उनका बॉर्न कौन से ईयर में हुआ था? सो 1772 CE। एट विच प्लेस? सो हम याद रखेंगे राधानगर विलेज। राधानगर विलेज जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट एंड बंगाल स्टेट में आता है। Then which evil custom was protested by the कौन से evil custom को उन्होंने प्रोटेस्ट किया था? चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, casteism, etc. So these are the evil customs which were protested by Raja Ram Mohan Roy. Then Raja Ram Mohan Roy, who published two newspapers, in which the first one is Samvad Kaumudi, and the second one is Mirat al-Akbar. Mirat al-Akbar, in which the Samvad Kaumudi written in Bengali language and Mirat al-Akbar in Persian language in 1822, and one is 1821. Then after Raja Ram Mohan Roy, who established one association, and name of this association is Brahmo Samaj. And after then he established one Hindu college in Kolkata. Then if we are going to talk that which recommendation he gave to the Britishers, कौन से recommendation थे जो उन्होंने Britishers को दिए थे? Recommendation the Britishers. So first one that freedom of speech, then judiciary, independent from executive, independent
Jones, Wright, etc. etc. With the help of William Benting, Raja Ram Mohan Roy and William Benting, who abolished Sati Pratha. In the year 1829, then he go to the England with the case related property, and there the city of England, the name of this city is Bristol, जहाँ पर उनकी क्या हुई थी डेथ। एंड आगे जाके ये जो प्रभु समाज था वो उनके लीडर्स एंड बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा क्या हुआ, कैरिड आउट हुआ, आगे चला। सो दिस इज अबाउट राजा राम मोहन राय। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दयानंद सरस्वती। हु इज दयानंद सरस्वती एंड which reforms made by Dayanand Saraswati? So turn your page number 2. In our first we have studied that Raja Ram Mohan Roy is a socio-religious, and Raja Ram Mohan Roy is also the first person who carried out this movement firstly. But the next one is Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती का बॉर्न कहाँ पर हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती। Dayanand Saraswati. So that Swami Dayanand Saraswati born in a Brahmin family in Tankara village. उनका जन्म हुआ था टंकारा विलेज में। Dayanand Saraswati realized that the idol worshipping and religious rituals were worthless. उनके हिसाब से किसी मूर्ति की पूजा करना या फिर हमारे जो रिवाज है, रिचुअल्स है, वो वर्थलेस है। इट मींस कि उसका कोई मतलब नहीं है कि रोज रोज उठ के उसकी पूजा करो, पूजा पाठ करो। He renounced his family and the world in search of truth. Renounce मतलब कि अपने घर को छोड़ देना। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था कि ट्रूथ खोजने के लिए। इट मींस दैट व्हाट इज रियलिटी, सच क्या है। He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. वो next 15 years तक इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया एंड योगा के बारे में उन्होंने डीपली जाना। Then he studied about the philosophy of Hinduism from Swami Vivekananda Dandisha in Mathura. उन्होंने हिंदुइज्म जो रिलीजन है, जो फिलोसॉफी है, उसके बारे में उन्होंने डीपली जाना फ्रॉम दंदिशा से। Then Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity in advocating a casteless and a classless society. आगे जाके उन्होंने लोगों को समझाया कि एक सोसाइटी होनी चाहिए कास्टलेस एंड क्लासलेस, जहाँ पर क्लास नहीं होना चाहिए, अपर क्लास, लोअर क्लास और मीडियम क्लास, या फिर कास्ट जहाँ पर मायने नहीं रखनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश करना उन्होंने एडवोकेट किया लोगों को। He preached to the people to go back to the Vedas. उन्होंने लोगों को समझाया कि सबको एक बार हमारे जो वेद है उसको पढ़ना चाहिए। He advocated that there is only one God. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही गॉड है। Swami Dayanand Saraswati also write one book which is सत्यार्थ प्रकाश, जिस बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। Dayanand Saraswati established Arya Samaj in 1875 and its branches also like Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, etc. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of the organization was continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai. After the death of
दयानंद सरस्वती, उनका जो एसोसिएशन था आर्य समाज, वो उनके लीडर मतलब कि हंसराज लाला लाजपत राय एंड गुरुदत्त ने संभाला था। In the year 1902 CE, Kangadi Gurukul was established near Haridwar by Swami Shraddhanand. And आगे जाके स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी गुरुकुल एस्टैब्लिश किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बॉर्न हुआ टंकारा विलेज, at the age of 15 उन्होंने अपना घर रिनाउंस किया, मीन्स कि छोड़ दिया। क्यों? सच क्या है वो जानने के लिए। Then next 15 years he traveled and studied about yoga के बारे में उन्होंने deeply study किया। Then from he also studied about philosophy of Hinduism. Philosophy of Hinduism from Swami Virjanand. उन्होंने स्वामी विवेकानंद से हिंदुइज्म के बारे में देखी जानी। You also gave one slogan which is go back to the Vedas. Go back to the Vedas and write one book and जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। Then in the year 1875, Swami Dayanand Saraswati established one association, and which name is Arya Samaj. And the branches of Arya Samaj is Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, etc. Then after the death of Dayanand Saraswati, his association, which is Arya Samaj, handled by their leaders like Pandit Gurudutt, Lala Hansraj, and Lala Lajpat Rai. Then in the year 1902, Kangadi Gurukul was established. Kangadi Gurukul was established by Swami Shraddhanand. Swami Shraddhanand in Haridwar. They also established one school. It will be established उन्होंने करवाई, जो कि थी महाकन्या विद्यालय, गर्ल्स के लिए। ठीक है। So this is about Swami Dayanand Saraswati, who is our second reformer. Then next we are going to study about Swami Vivekananda, who is the prominent reformer of our Indian society. So, your page number 3 about Swami Dayanand Saraswati. Swami Dayanand
सरस्वती के बाद हम अभी लेने वाले हैं स्वामी विवेकानंद, and who is also my favorite reformer. A Bengali graduate named Narendranath Dutt, who born in 1863, came into contact with Ramakrishna Paramahansa, who reciprocated his quest for knowledge. जिन्होंने अपनी लाइफ किसको दी थी? नॉलेज सर्च करने के लिए. Narendra became a disciple of Ramakrishna and became the ascetic, means a sannyasi, later acquiring the name Swami Vivekananda, जिसके बाद उनको एक नाम मिला स्वामी विवेकानंद. He did an intensive study of Indian and Western philosophy. Indian and Western दोनों philosophy पे उन्होंने study किया. Swami Vivekananda attended the Parliament of Religion in Chicago in the year 1893. जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट अरेंज होती है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने ये मीटिंग अटेंड की थी. एंड ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर. इंडिया का कल्चर एंड फिलोसफी जहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था. He propagated the Indian culture by touring various countries like United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. उन्होंने अलग-अलग कंट्री में जाके इंडिया का जो कल्चर है वो लोगों को समझाया है. And he gave the legendary slogan to the Indians, which is "Arise, awake, and not stop till the goal is achieved." उठो, जागो और तब तक काम करो जब तक आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होता. स्वामी विवेकानंद established the Ramakrishna Mission. रामकृष्ण परमहंस जो कि उनके गुरु थे. Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE in the name of his guru. It has its headquarters at Bangalore. जिनका headquarter कहाँ पर है? Bangalore. This mission adopted the ideals of service to mankind throughout various work. अलग-अलग work से मतलब इंसानों में उनकी जो इंसानियत है उसको जगाना था. This mission followed the slogan which is service to man is service to the God. ऐसे लोगों की हेल्प करो जिसको किसी इंसान की जरूरत है. It means कि serve the poor and look for God in needy people. इंसान भगवान को ऐसे लोगों में ढूंढो जो गरीब है, जिनको आपकी जरूरत है. This mission opened schools across the nation for imparting education. Hospitals were run by the mission to help the people in need. So even today, the branches of mission are functional in India and also in abroad. Swami Vivekananda, who is a Bengali graduate person. जिनका जन्म हुआ है 1863 में. Who came to contact with Ramakrishna Paramahansa, who reciprocated his quest for knowledge. And here Swami Vivekananda became his disciple. And after that he is known as ascetic, means the sannyasi. And then he acquired the name of Swami Vivekananda. Whose original name was Narendranath Dutt. Narendranath Dutt. जिनका original नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त. बट एस्थेटिक सन्यासी बनने के बाद उनको नेम मिला स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद अटेंड रिलीजियस पार्लियामेंट मीटिंग at Chicago. The year 1893. Then
one which is arise, awake, and what stop, still the goal is achieved. Then by Swami Vivekananda they established one mission, one association which जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने ये मिशन बनवाया। अभी इस मिशन का भी एक स्लोगन था जिसका नाम था, नेम ऑफ दिस स्लोगन, सर्विस टू द मैन is service to the God. Service to the God. By gaining motivation from the life of Ramakrishna Paramahansa. And this mission imparting education, जिन्होंने एजुकेशन इम्पार्ट किया, जिसके लोगों तक पहुंचाया, हॉस्पिटल्स बनवाई, एंड जो नीडी पीपल्स थे उनकी हेल्प की। So this is about Swami Vivekananda, who is our third reformer, and now next we are going to learn our next reformer, who is Thakkar Bappa. So turn your page number 5. Page number 5, and जहाँ पर हम अभी स्टडी करने वाले हैं ठक्कर बाबा के बारे में। अरे रेकॉर्डिंग पूરું થાય ને એટલે સોંગ બંધ કરી આવું છે, મળી રહેશે, આવે છે બરાબર, શરૂ છે નહીં ને? Thakkar Baba's contribution as the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by Gandhiji was very valuable in the upliftment of the untouchable means की हरिजन। ऐसे भी लोग थे जो कि लो कास्ट बिलोंग करते थे, इन लोगों जो अदर लोग हैं वो उनको मतलब अनटचेबल, मतलब उनको छूना नहीं है, लाइक वो लो कास्ट के, तो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए ठक्कर बाबा वर्क करते थे, जिन्होंने अखिल हिंद हरिजन संघ को ज्वाइन किया था, जो कि एस्टैब्लिश किया था गांधी जी ने। He worked tirelessly to provide relief to the people affected by natural calamities। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी से इफेक्ट हुआ है तो ऐसे लोगों को भी ठक्कर बाबा उनको हेल्प करते थे। So we can say that Thakkar Bappa is very helpful and a beautiful person, means a devoted servant of the people throughout his whole life। Thakkar Bappa established the Panchmahal Veer Seva Mandal and tried to reform the lives of people who inhabited the deep forests and the hilly areas of the Panchmahal region। पंचमहाल रीजन जहाँ के हिली एरियाज है या फिर फॉरेस्ट के कोई रीजन है, तो वहाँ के जो भील है, मीन्स कि जिसको हम बोलते हैं आदिवासी, तो ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए, उनको काम मिले, उनको आगे लाने के लिए ठक्कर बाबा ने बहुत ही वर्कआउट किया है। एंड ठक्कर बाबा एंड हिज फॉलोअर freed the field from the addiction of alcohol, other evil custom and superstition। भील के जो लोग थे वो अल्कोहल से एडिक्टेड थे, तो उन लोगों को उससे मुक्त किया, प्लस उनका जो सुपरस्टिशन था उसको दूर किया, एंड उन लोगों को पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया बाय एस्टैब्लिश पंचमहाल भील सेवा मंडल। He opened school for the Bhil children. They operated how to spinning wheel to
produce khadi and involve them into the small cottage industry, means in a professional life. So, as time passed, awakening and nationalism among people which connected them better with the freedom movement. यही रीजन की वजह से वो आगे जाके फ्रीडम मूवमेंट के साथ कनेक्ट हुए. सो गांधी जी एम्फासिस उनके प्रैक्टिसेस की वजह से द रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास. जो बैकवर्ड क्लासेस थे उन लोगों को आगे लाने में काफ़ी हेल्प हुई. गांधी जी के जो एम्फासिस थे, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, प्लस ठक्कर बाबा के जो एसोसिएशन थे पंचमहाल वीर सेवा मंडल, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई लोगों को. ठक्कर बाबा जिन्होंने अखिल हिंद हरिजन संघ को ज्वाइन किया, मीन्स कि वो क्या थे, वहाँ के हैं जो कि बनवाया था, एस्टैब्लिश कराया था गांधी जी ने. So throughout his whole life, Thakkar Baba is a beautiful person. ठक्कर बाबा जिनका ओरिजिनल था अमृतलाल ठक्कर. Later on, Thakkar Baba established Panchmahal Veer Seva Mandal. पंचमहाल वीर सेवा मंडल, जो कि उन्होंने जो हिली एरियाज के जो पर्सन थे उन लोगों को आगे लाने के लिए, प्लस की जो फॉरेस्ट में रहते थे, मीन्स की जो भील है, उनको आगे लाने के लिए उन्होंने ये एसोसिएशन स्टार्ट किया. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एसोसिएशन एंड देयर फॉलोवर, दे आल्सो सक्सेसफुल टू freed and removal of addicted person with the alcohol, then from superstition, casteism, untouchability, etc. Then उन्होंने लोगों को ऑपरेट करना सिखाया. क्या ऑपरेट करना सिखाया? स्पिनिंग व्हील, ताकि वो लोग भी अपना कुछ काम कर सके. एंड प्लस वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पर वो अपना अलग उसमें काम कर सके. कॉटेज इंडस्ट्री वो लोग स्टार्ट कर सके. प्लस दे ऑल्सो स्टडी, उन लोगों ने सिखाया एजुकेशन. किसको? पील के जो चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन ऑफ पील, उन लोगों को सिखाया. सो ऐसे ही गांधी जी के जो एम्फासिस थे, प्लस ठक्कर बाबा की वजह से बहुत सारे जो इलीगल कस्टम थे उसको काफी हेल्प हुई रिमूव करने में. एंड प्लस जो बैकवर्ड क्लासेस थे वो लोग उनको आगे ला सके. बैकवर्ड क्लासेस को वो लोग अपलिफ्ट दे सके, तो वो आगे ला सके. So in today class we had studied about the four reformers who had started to movement to abolish such a superstition and evil custom, in which the first person and the first reformer was Raja Ram Mohan Roy. Then we studied about the second person, which is Dayanand Saraswati. Then third one is Swami Vivekananda, and into the last, the fourth one, who is Thakkar Baba. So then next video, next classes, now we are going to study about the three religion and three classes, which is in page number 4, means a Muslim community, Sikh community and Parsi community. इसके बारे में हम deeply जानेंगे in next lecture. So bye and have a good day.